The best design in my opinion belongs to the Redmi Note 12 Pro, especially in the pink color variant. It is actually thinner, so it is easier to use with one hand. All of these phones are not built with premium materials, but they come with a good build quality and the IP53 certifications, making them dust resistant and splash resistant. The Pro and the Pro Plus variant are equipped with the same display. It is an OLED panel able to show up to 1 billion colors with a diagonal of 6.67 inches, 120 Hz refresh rate, Dolby Vision support and HDR10 Plus certification. They come with a side-mounted fingerprint reader and dual stereo speakers. The Pro and the Pro Plus variant, you will get a high-end Dimensity 1080 mobile platform by MediaTek running at a max frequency of 2.6 GHz and paired with up to 12 GB of RAM and up to 256 GB of internal storage. All of the variants run Android 12 out of the box, customized with MIUI 13. All the variants of the Redmi Note 12 are equipped with the same battery capacity, 5000 mAh. Given that these components have more or less the same energy consumption, you should not expect big differences in terms of battery life, but there are important differences when it comes to the charging speed. The Pro Plus variant supports 120 watt fast charging. The Pro one has 67 fast charging and the vanilla version supports 33 watt fast charging. The best camera setup belongs to the Redmi Note 12 Pro Plus. It is equipped with a triple rear camera including a main 200 megapixel sensor with OIS. The Redmi Note 12 Pro takes a silver medal with a 50 megapixel sensor with OIS, optical image stabilization, an 8 megapixel ultra shooter and a 2 megapixel macro lens, while on the front there is a 16 megapixel camera. Now it's time our sponsor. Nowadays, many of websites know your locations through your IP address. Your IP address reveals your location and these websites often store all your data. The country and the region you are visiting the websites from is known to them and VPN hides it. It hides your IP address. In my opinion, the best VPN app is NordVPN, which I use it regularly because I live in China, and you know, in China many websites are blocked such as YouTube, Facebook, Instagram, etc. NordVPN is one of the only VPNs that work even in countries like China. NordVPN helps to unblock the blocked websites everywhere. NordVPN has sponsored this video, so there's a big discount for you guys. If you use my referral link and purchase the 2-year plan, first you would get a big discount and then you will also get 2 or 3 months free. And the best thing is that they give a 30 days money back guarantee. You can try for 30 days to see. If you don't like it, they will return your money. The link is in the description. Now it's time to back to our video. I have took some photos and videos to show you the result of this smartphone, but I didn't record in English. I hope you could understand. Thank you. Redmi Note 12 Pro की मैंने ये कैमरा सैम्पल्स कुछ लिए हैं इसके। तो पहली पिक्चर्स मिलेगी इसकी प्रो से ली है मैंने। नॉर्मल ये 50 मेगापिक्सल नहीं है, मगर ये फुल इसने स्क्रीन दी है मुझे, तो ये इसका ये रिज़ल्ट है। ये अभी 50 मेगापिक्सल से मैंने पिक्चर नहीं ली है, तो जब 50 मेगापिक्सल से लेते हैं तो ये आपको फुल स्क्रीन नहीं देगा। तो ये इसका जो है ये 50 मेगापिक्सल से ली है। तो अभी देखते हैं हम, देखें जूम कर रहा है तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी दिखा रहा है पहले वाली पिक्चर से। तो बस 50 मेगापिक्सल तक ये यहाँ तक जाएगा, इतना ये जूम करेगा और ये इतनी ये क्वालिटी देगा। तो ये अल्ट्रा वाइड नहीं है, अल्ट्रा वाइड से ये आप 50 मेगापिक्सल से नहीं ले सकते हैं। इसके बाद ये मैंने नॉर्मल कैमरा से ली है। ये इसका काफ़ी अच्छा लगा, ये फुल स्क्रीन पे ली है इसने, तो ये भी जो है अल्ट्रा वाइड नहीं कर सकता। उसके बाद ये मैंने थोड़ा जूम किया है। इसके 3 मोड है जूम करने के, तो मैंने मज़ीद जूम किया है। पहले यहाँ था, फिर ये मज़ीद जूम किया है, तो ये रिज़ल्ट है। उसके बाद फिर मैंने इसका एक और जूम किया है, तो यहाँ तक है। काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, देखें ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी अच्छा कलर इसने ग्रेडिंग करके दी है, पिक्चर्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं। इसके बाद फिर मैंने सबसे लास्ट जूम किया है, तो उसका ये रिज़ल्ट मिला है। दूर तक आप देख सकते हैं कि बस वगैरह, मगर बस का नंबर क्या है ये पता नहीं चल रहा। इसके बाद ये मैंने फ्रंट कैमरा से सेल्फ़ी ली है, तो ये इसका रिज़ल्ट है फ्रंट कैमरा से। आई थिंक इसने ख़ुद ही ऑटोमेटिक इसने थोड़ी सी ब्यूटी की है इसके अंदर।
उसके अंदर फिर मैंने ये पोर्ट्रेट से ये सेल्फ़ी पिक्चर ली है। तो ये पोर्ट्रेट में जो है ये बैकग्राउंड ब्लर दिखा रहा है। उसके बाद फिर मैंने एक बैक कैमरा से ये पोर्ट्रेट लेने की कोशिश की, मगर बहुत करीब गया, फिर भी ये है पोर्ट्रेट इसने नहीं किया। पोर्ट्रेट से मैंने पिक्चर ली है। यहाँ भी मैंने पोर्ट्रेट करने की कोशिश किया मगर इसने पोर्ट्रेट नहीं लिया बैक कैमरा से। ये भी मैंने पोर्ट्रेट करने की कोशिश किया मगर नहीं किया। देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लर नहीं दिखा रहा। मैंने ब्लर का सेटिंग भी चेक की मगर फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद ये मैंने फ्रंट कैमरा से ये वीडियो बनाई है। हे गाइस, ये मैं इसके फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ 1080p 60 fps पे। तो ये फ्रंट कैमरा से ये इसका रिज़ल्ट है इस वक्त डे टाइम में। तो नाइट टाइम में क्या होगा कुछ नहीं पता, मगर मुझे ये अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड जो है हल्का हल्का वो ब्लरी कर रहा है और मुझे जो है वो पूरा फोकस दे रहा है। तो आई थिंक अगर मैं इसे फ़ौरन करता हूँ तो फ़ौरन ये मुझे फोकस कर लेगा। आई होप कि आपको आवाज़ मेरी ठीक से सुनाई दे रही होगी। ये फ़ोन मुझसे बहुत दूर नहीं है मगर मैं रोड पे हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे शोर है। तो ये इसका फ्रंट कैमरा से रिज़ल्ट है। अब बैक भी देखते हैं। ये मैंने 4K 30 fps से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की है, तो उसका ये रिज़ल्ट है। और मैं अभी थोड़े ये रनिंग करके दिखा रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है इसके अंदर। तो ये इसका बैकग्राउंड का ये रिज़ल्ट है। मैं जूम कर रहा हूँ अभी इस वक्त इसे। जूम करने की स्पीड भी तेज़ ही है। अगर हम वहाँ तक जाते हैं तो जो करैक्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लरी हैं, ठीक से नज़र नहीं आ रहे। और ये ये बैक कैमरा से अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है और ये मैं अभी अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही हो पता नहीं, आई डोंट नो। तो ये 50 मेगापिक्सल से ये मैं बैक कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ 4K। आई होप कि आपको पसंद आई हो। Xiaomi Redmi Note 12 Pro phone price in USA starts from $240, 6GB RAM, 128GB internal storage. This is the lowest internal storage of Note 12 Pro, and the highest storage is 256GB internal storage, which is 12GB RAM as well. 50 megapixel triple rear camera and 60 megapixel selfie camera. Would you like to buy this phone or you have to wait for the global version? Let me know, and I hope you like my video. If you do, please consider to subscribe to my channel, and I will see you in the next one. Bye.